I mean, I smoke cigars, but I know what the fuck I'm doing. Give me a big fat cigar. I'm risking cancer to look like a mafia boss. Do I look like a mafia boss now? I don't know. Top G is an individual who is capable in all realms, as my father said. Do you know what a top G is? Top G एक ऐसा इंसान होता है who is feared by everyone and respected by everyone. एक alpha male जिसको पता है कि दुनिया कैसे चलती है और दुनिया को कैसे चलाया जाता है. And he knows how to protect the people he loves. ऐसे इंसान को टॉप जी बोला जाता है. और ऐसा ही एक इंसान अभी इंटरनेट पे कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है. और अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूं तो there is something wrong with your internet. This is the story of the most famous internet gangster. ऐसे ही एक दिन मैं इंटरनेट चला रहा था और मेरे सामने एक वीडियो आई. वो वीडियो थी फ्रॉम द पॉडकास्ट फ्रेश एंड फिट और उस वीडियो का टाइटल था अ डार्क फ्यूचर इज कमिंग फॉर दीज विमेन. ये टाइटल पढ़ते ही पहले तो मैंने डार्क देखा टाइटल में और मैं वहीं क्यूरियस हो गया था कि ऐसा क्या है. लेकिन पूरा टाइटल ध्यान से पढ़ने के बाद भी मैं गेस नहीं कर पा रहा था कि इस वीडियो में क्या है और मैं बहुत क्यूरियस था. सो आई ओपन द वीडियो ओपन करते ही मेरे को दिखा एक बॉल्ड इंसान जो बीच में बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं जो एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. A life without children is vapious, and it's inane, and it's pointless. And you may sit here and think that your career matters, but the truth is that your job will fire you out of whim and don't give a second, right. don't give a solitary shit. So and when you're 52 and you're past it with no grandchildren in a house by yourself, and all your friends have grandchildren in this beautiful life, and you're sitting there by yourself, do you think the fact that you can afford a few extra Gucci bags is going to genuinely make you feel happy? I was at my grandmother's 93rd birthday. I looked there. My grandmother had 9 children because there was my father and 8 more. They all had a bunch of kids, blah, blah, blah. I stood there and I looked at my 93-year-old grandmother and there was a whole room full with maybe 70 people that came from that one woman. Isn't that remarkable? Yeah. That nobody cared about her career. Nobody asked what job she did. Nobody asked how many times she went to the club. Nobody asked if she had time to go to festivals. No, you had 70 sentient beings, including myself, full of life from one woman who dedicated herself to being a mother and a good wife. That is beautiful. And if you sit here and genuinely think that you're going to work your ass off through your fertile years and by the age of 54 you're not going to be suicidal alone with a cat, then you're dumb. After watching this video, I was like कि मैं इस इंसान के कुछ पॉइंट से एग्री कर सकता हूँ. बट ये कौन है जो लाइव इंटरनेट पे पूरी तरीके से मिसोजिनिस्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ भी बोल सकता है and gives absolutely zero fucks. ये इंसान कौन है जिसको इंटरनेट से डर नहीं लगता? ये कौन इंसान है जो हर बार ऐसी चीज करके निकल जाता है और इसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ते? मैंने सर्च करा and he was Andrew motherfucking Tate, the top G, a multi-millionaire who lives in Romania right now. लेकिन he was born in Washington DC because Romania is corrupt. तुमने ये चीज एकदम सही सुनी है. Yes, because Romania is corrupt. इसी वजह से एंड्रू टेट मूव टू रोमानिया सो दैट वो उस करप्शन का फायदा उठा के अपने हिसाब से लाइफ जी सके. ही इज द ओनली मैन विद द कॉपर कलर बुगाटी शेरॉन. देयर इज ओनली वन इन द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया में एक ही बुगाटी शेरॉन है कॉपर कलर की और वो एंड्रू टेट के पास है. और ये पॉइंट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज एंड्रू टेट इज द रीजन बिहाइंड द वायरल क्लिप. What color is your Bugatti? Andrew Tate also streams on Twitch with his brother Tristan Tate, and साथ ही साथ right now he is the most viewed person on TikTok without having a TikTok account. Like imagine how is that even possible? Andrew Tate के इतने सारे फैन पेजेस हैं जिन्होंने ये सारी वीडियोस डाली है टिकटॉक पे और टिकटॉक पे लोग इन्हें देखना पसंद भी करते हैं. How is this even possible कि एक इंसान एक प्लेटफॉर्म पे इतना फेमस हो जाता है without even having an account? It's crazy. Billions of views in like 2 months, 3 months. मैंने बहुत सारे इंटरनेट सेलिब्रिटीज देखे, बहुत सारे जो आए हैं चले गए हैं, जो रुक गए, जो काफी टाइम से यहाँ पे, बट मैंने कुछ भी एंड्रू टेट जैसा अभी तक नहीं देखा. He is very close to becoming the most relevant internet celebrity of this year. काफी सारे लोग एंड्रू टेट को एक मिसोजिनिस्ट भी बोलते हैं,
मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, लेकिन एंड्रू टेट खुद को एक रियलिस्ट बताते हैं. Andrew Tate is 35 right now, and when he was young, he was a kickboxer. Because of that, अपने past fighting career की वजह से he can fight right now. At the age of 35 also he can fight, and साथ ही साथ he has 15 to 20 supercars. 15 to 20 supercars worth millions, जो कि prove करता है कि he's rich. That is why one day he came on stream and said this. I realized yesterday that I can actually, genuinely, right now, nothing is stopping me from becoming Batman. Nothing. I have a Batcave. Okay, yep. I have an Alfred. Okay. I have a Batmobile, a Bugatti. Yep. I can fight. Yep. Rich as fuck. You can afford body armor and all the crap that All Batman the crap, needs. can buy it all. I'm charismatic. There is nothing stopping me putting on a suit and being Batman. Not pretending to be Batman. Actually 100% being Stop being criminals. एंड्रू टेट एंड हिज ब्रदर ट्रिस्टन टेट के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी, एंड दैट इज दे ट्रस्ट ईच अदर एंड दे लव ईच अदर टू डेथ. उनके सेम बैंक अकाउंट से, एक ही बैंक अकाउंट दोनों भाई चलाते हैं. दे ओन द सेम कार्स, द सेम हाउस, द सेम बिजनेसेस, दे डू एवरीथिंग टुगेदर. दे आर द टेट ब्रदर्स. वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते. वो दोनों भाई ये तक बोलते हैं कि द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू देम is losing each other. That's why they travel together. कि प्लेन भी क्रैश होगा तो हम साथ में जाएंगे. They drive together. कि अगर एक्सीडेंट होगा, कोई मरेगा तो दोनों साथ में मरेंगे. मैंने इससे ज्यादा भाईचारा आज तक नहीं देखा किन्हीं दो भाइयों में. दोनों के दोनों 6 फुट से ज्यादा लंबे हैं, हट्टे कट्टे फाइटर हैं, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमीर है. लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे. अभी तुम इन दोनों को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. एंड्रू टेट बीइंग एट 3.1 मिलियन एंड ट्रिस्टन टेट एट 872K फॉलोअर्स. और तुम इन दोनों के इंस्टाग्राम से देख ही सकते हो कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है और ये कैसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ाते हैं. एक और वीडियो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि एंड्रू टेट ने रियलाइज करा कि एंड्रू टेट एंड हिज ब्रदर दे आर लाइक द एक्चुअल माफिया इन रोमानिया. वो माफिया बनना नहीं चाहते थे, बट वो कहीं ना कहीं अपने तरीकों से बन ही गए हैं. दे हैव द पावर्स जो एक माफिया के पास होती है. वॉच दिस. Are we Mafia? Anyway, I don't think I'm Mafia. So I said to Tristan, look, we're not Mafia. And Tristan goes, yes, we are. And I said, why? He goes, we're 2 huge fighting brothers with women naked on the internet who own casinos, who drive around Bucharest, Romania with over $2 million worth of fucking supercars. Everyone's afraid of us. And if anyone did piss us off at any point, even if we didn't want to fuck them up ourselves, we could make one phone call and they'd either be in a ditch or lose their any right to stay here. They'd have some visa issue and kicked out the country, or arrested for no reason and put in a jail cell for months at a time. We are basically as mafia as you can get. Now the question is कि इनके पास ये इतना पैसा आया कहाँ से? इन दोनों के पास हमेशा से पैसा नहीं था. एंड सरप्राइजिंगली एट द एज ऑफ 25 दोनों ऑलमोस्ट ब्रोक थे. ब्रोक मीन्स हैविंग नो मनी. इनके पास कोई पैसा नहीं था. एंड 25 से पहले एट द एज ऑफ 21 दूसरे भाई ट्रिस्टन टेट का बर्थडे था, एंड दिस हैपेंड. As a true story. I was 21 years of age. This is not long ago. 21 years of age. Yesterday was my birthday. And me and Andrew, what did we eat on my birthday? KFC. Why did we eat KFC? Because when I was 21, me and Andrew used to have no food. I used to drive my broken Volkswagen Golf to the KFC restaurant in Dunstable, United Kingdom. And I used to sit in my car. And you couldn't ever eat anyone's leftover food if they ever had their mouth on it. But at KFC, they used to buy buckets. And I would sit and wait for people to sit outside, eat their meal, and leave the bucket on the table. And I used to go and take that bucket, 3 or 4 pieces of chicken. And I used to collect 20, 30, 40 pieces of chicken that were perfectly fine left in the buckets. And I used to go home and I used to freeze that chicken. And me and Andrew would break it up, put it in our rice. And that was our meal. That's what sustained us for that hard year. That year we had when I was 21 and you were 22. That's how broke we were. I used to scavenge chicken from KFC because I thought, fuck it, I'm not dying and I'm not losing my kickboxing fights because I don't have enough protein. What am I going to do to make it through the day? That's how broke I was. And that's a sad story if you never make it out. To me, that's a happy story. That's a story of triumph. Now the question is कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से? ये दोनों काफी ब्रोक थे जब ये यंग थे. And one day, Andrew Tate got angry कि ये क्या चल रहा है? हम दोनों यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं टू बाय फूड. हमारे लिए हम खाना नहीं खरीद सकते और बाहर कोई इंसान फेरारी चला रहा है. लाइक व्हाट इज दिस? ये जो मैट्रिक्स है, ये जो दुनिया है, इसमें कोई ना कोई ग्लिच है.
कोई ना कोई दिक्कत है और हमें इस मैट्रिक्स से बाहर आना पड़ेगा, वी हैव टू बी रिच। एंड एंड्रू टेट ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया एंड ही टोल्ड ट्रिस्टन टेट कि मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक मैं कोई वे फिगर आउट नहीं कर लेता हूं फॉर अस टू गेट रिच। ट्रिस्टन टेट वाज लाइक ओके फाइन। एंड्रू टेट वेंट इनसाइड, इंटरनेट खोला एंड स्टार्टेड सर्चिंग व्हाट इज मनी, हाउ मनी वर्क्स। ये सारी चीजें सर्च करते हुए एंड्रू के सामने बेसिक्स आए अबाउट मनी, विच इज लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो तुमसे पैसा छीनती है एंड एसेट वो चीज होती है जो तुम्हें पैसा देती है। तो एंड्रू टेट ने शुरू कर दिया लिखना उसके सारे एसेट्स को एंड धीरे धीरे वो लिखता गया। द फर्स्ट थिंग दैट केम इन हिज माइंड वाज दैट ही इज स्ट्रांग बिकॉज ही इज अ फाइटर। तो लेकिन वो चीज वो ऑलरेडी यूज में लगा चुके हैं हिज फाइटिंग करियर एंड उससे कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। सोचते सोचते और ज्यादा ध्यान आया कि इनके पास एक बहुत ही टूटी फूटी गाड़ी रखी हुई है, वो भी एक एसेट हो सकती है, लेकिन उससे कैसे ही पैसे बनाएंगे। एंड्रू रियलाइज बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग करियर, जो फाइटर्स होते हैं UFC फाइटर्स होते हैं, तुमने खुद देखा होगा कि उनका जो केज होता है उनके बाहर होती है रिंग गर्ल्स जो राउंड 1 राउंड 2 वाले बैनर्स लेके आती है एंड जो भी मैच का विनर होता है वो अपने साथ रिंग गर्ल को घर ले जाता है। एंड एंड्रू टेट बीइंग चैंपियन मल्टीपल टाइम्स, he had many girlfriends throughout the world, क्योंकि throughout the world he was fighting for championships and वहाँ पे जीत के काफी सारी रिंग गर्ल्स के साथ एंड्रू टेट ने दोस्ती करी हुई थी एंड बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी एंड्रू की। एंड he was like okay, this can be an asset but I don't know how. Later on he was surfing the internet and surf करते करते he got to a website जहाँ पे एक ad आ रखी थी, talk to live girls, watch live girls. He opened the link and he saw that there is this one girl who is stripping on the internet and he saw notifications of money and donations. एंड्रू टेट के दिमाग में आया कि ये क्या हो रहा है, what is going on, and he realized कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसा एसेट है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ and I can make money. एंड्रू टेट रूम से बाहर आया and he was like okay, I have an idea. एंड्रू टेट ने अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को फोन करा थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में, एंड टोल्ड देम कि तुम मेरे घर आओ, आई हैव टू डिस्कस समथिंग। एंड्रू टेट ने अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को घर बुलाया, उनसे बात करी, सबको एक दूसरे के बारे में बताया कि हाँ मैं तुम सबके साथ एक साथ था, आई हैव अ बिजनेस आइडिया और मैं इस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, जो मेरे साथ आएगा मैं उसको पैसा बना के दे सकता हूँ एंड जिसको यहाँ पे बुरा लग रहा है, जो ऑफेंड हुआ है, कैन गेट द फक आउट राइट नाउ। उस टाइम पे 5 लड़कियां आई थी जिसमें से 2 रुक गई एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ एंड्रूज फर्स्ट बिजनेस। और ये कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं था, ये बिजनेस महीनों के अंदर इतना ग्रो हो गया था कि दे वर मेकिंग $500,000 पर मंथ। दे वेंट फ्रॉम 2 गर्ल्स टू 17 to 24 गर्ल्स। धीरे धीरे करके इनका ये बिजनेस बढ़ता गया एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड गेटिंग रिच। दे स्टार्टेड अ वेबकैम बिजनेस उस टाइम पे जहाँ पे इंटरनेट ढंग से शुरू ही नहीं हुआ था, जहाँ पे वीडियो भी बहुत कम फ्रेम रेट में अटक के चलती थी। उस टाइम पे ही डेवलप्ड सच अ फैंटास्टिक आइडिया जहाँ पे वो एक ऐसी चीज सेल कर सकता है जिसके लिए डिमांड हमेशा रहेगी। इस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि अब हमें और बिजनेसेस खोलने पड़ेंगे और कंपनीज खोलनी पड़ेंगी टू ग्रो मोर एंड दैट इज व्हेन दे मूव टू रोमानिया। रोमानिया पहुंचने के बाद दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, दे ओपन कैसीनोज, मल्टीपल कैसीनोज। साथ ही साथ द यंगर ब्रदर ट्रिस्टन टेट हैंडल्स एन ओनली फैंस कंपनी जहां पे दे मेक मिलियंस, आई एम नॉट इवन किडिंग, मिलियंस। दे आर बेसिकली रूलिंग द ओनली फैंस इंडस्ट्री, हैविंग नो मनी एंड फ्रॉम देयर गोइंग टू अ प्लेस जहां पे यू हैव सो मच मनी कि तुम काउंट नहीं कर सकते। द क्वेश्चन इज व्हाट्स नेक्स्ट, एंड व्हाट्स नेक्स्ट का आंसर था एंड्रू टेट के पास, conquering the internet. Andrew Tate is a genius when it comes to marketing. Andrew Tate ने बिना कोई अकाउंट बनाए पूरा टिकटॉक डोमिनेट कर रखा है at this very moment. Andrew Tate is everywhere on YouTube. हर दूसरे पॉडकास्ट पे एंड्रू टेट की कोई ना कोई या तो क्लिप होती है, एंड्रू टेट खुद होता है। Every fucking celebrity is talking about him. बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फेमस होते होते एंड्रू के जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे, जो स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स थे, उसकी वजह से एंड्रू गॉट बैंड ऑन ट्विटर। काफी टाइम हो चुका है इस चीज को, बट एंड्रू टेट वाज बैंड ऑन ट्विटर बिकॉज ऑफ हिज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ऑन वेरी डिफरेंट टॉपिक्स। एंड जिन जिन लोगों को पता है एंड्रू टेट के बारे में, वी हैव सीन हिम कॉन्कर द इंटरनेट। Slap, slap, grab, choke, shut up bitch, sex. Only a cat-owning bitch would complain to the police about a fucking joke.
I walk into hell and the devil's like, oh, I'm gonna burn you. I ain't gonna do shit. I find myself super funny. I find myself super funny. The French are weird. One dude, he must have been about 50, got naked, then go on the dance floor and just like start to dance. Just like, why? Why? So what happens is you're standing there and they say, oh, I don't actually eat gluten. एंड्रू टेट खाली ट्विटर से बैन नहीं हुआ है, ये तो 1% भी नहीं है प्रॉब्लम्स का। एंड्रू टेट गॉट अरेस्टेड बाय द रोमानियन पुलिस। एंड्रू टेट एंड ट्रिस्टन टेट वर अरेस्टेड बाय द पुलिस क्योंकि पुलिस को किसी ने ये इन्फॉर्म करा था कि दे आर ह्यूमन ट्रैफिकर्स। वो लोगों को किडनैप करके इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड सेल देम। दैट इज हाउ दे आर सो रिच। एंड पुलिस को ये इन्फो दी गई थी कि उन्होंने किसी लड़की को किडनैप करा है। ये एलिगेशन लगने पे जो भी लोग एंड्रू टेट को हेट करते थे वो सारे एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि हमने तो बताया ही था। लेकिन उसके अगले दिन ही एंड्रू टेट वाज लाइव ऑन हिज स्ट्रीम एंड एंड्रू टेट ने ये बताया, Me and you run an international kidnapping and human trafficking ring. This is a good one because I love this because everyone who dislikes us and hates us instantly jumps to They're sex traffickers! Yeah. That's why we're on a podcast and like completely free in our house. Is house arrest? I mean, what is this? That's why we're free to travel the world. Right, can I talk a little bit about the origins of this story? So the origins of this story is because there were some photographs of the police who did in fact come to my house, and the police did in fact search my house. Now the internet, like everything else, they get pictures of the police searching someone's house. The internet can just run away with whatever it wants to say. But the actual story, I wish it was something cooler. It's so fucking lame that I'm gonna tell you all right now. A girl had been at a party at my house, and her boyfriend, who was obviously a fan of Emergency Meeting Live, saw her Instagram stories, said, oh my God, you're at the Tate Brothers house in Romania. This was some American chick. And she went, no, I didn't want to come to this party. They made me come here and I'm not allowed to leave. She said that to her boyfriend. That's some bullshit excuse. So her boyfriend is obviously one of these believe all females. Oh my God, my girlfriend calls. She was, 1 second, she wasn't even hot. She wasn't even hot. She was ugly. He calls the fucking police and says, my girlfriend's being held against her will by the Tate Brothers. The police call the American embassy, and the next day, the police come to our house. Fully loaded, the American embassy send the cops to our house. Now, they take us to the police station. So all the pictures of me and Andrew being taken away by the police, those are real photos. And what happens is they search our house. They find no drugs. They find no women. They find no people. They find nobody. It's a big, luxurious, amazing, badass fucking house, but there's nothing illegal in the house. So we're sitting there at the police station. The prosecutor says, yes, we searched your house. I'm like, all right, good. What'd you find? Well, nothing. But the report said that you were holding people hostage. I said, bro, there was no one at my house. He goes, yes, I know. Well, we checked the CCTV. I said, oh, what did you find? The girl who made the complaints was outside the gates taking pizza delivery and coming back inside. Ha ha ha. So I'm sitting there laughing. The police are laughing. The prosecutor's laughing. And then I went home. But the internet being the internet, now we run an international human trafficking kidnapping ring. But we didn't go to jail for even 1 second. I don't understand how that could be true. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि वो एक लड़की की वजह से फंसे थे। ऐसा मल्टीपल टाइम्स हो चुका है बिकॉज उनके बिजनेसेस ही ऐसे हैं। वो काफी बार ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं। They have multiple enemies throughout the world. They are millionaires, multi-millionaires. They are rich, they are strong, they are famous now. I really think कि आगे जाके Andrew Tate can be the most famous internet celebrity in the world. I really think so. क्योंकि जिस रेट पे Andrew Tate का नाम ग्रो कर रहा है, it's insane. एंड अगर तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंच ही गए हो तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारा अब रेकमेंडेड सेक्शन कहीं ना कहीं एंड्रू टेट की वीडियो से भरने वाला है। मैंने अभी अभी तुम्हें एक इंटरनेट गैंगस्टर की स्टोरी बताई है। नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू बी अ टॉप जी? मेरे से नहीं फूका जा रहा भाई। ओ माय गॉड, दिस इज सो फकिंग बैड भाई। कैसे वीडियो के चक्कर में ना, ओहो, आई एम गोना डाई।
you.